purposes and other official requirements. So I'm starting with the recording now. Okay. So basically, like when we are talking about stories, first question that one can ask us that why do we need to use storytelling as a classroom practice? Huh? कितना अच्छा तुम्हारा तरीका है that we go to the class, open the textbook, explain all the relevant, concepts, and then ask students to, practice the question answers and everything. And then a student answer those questions. We understand that they have understood the topic. Job is done. We will complete our syllabus on time and everything. But then remember, this is, we are now entering into a stage which we call competency-based education. और competency based education का मतलब ये हो गया कि सिर्फ बच्चों को आप theoretical knowledge नहीं देंगे, बच्चों को जो है उन concepts के application का भी knowledge होना चाहिए और उस नॉलेज के प्रॉपर मैनिपुलेशन का भी जो है उनके पास स्किल होना चाहिए, उसके क्रिएटिव एप्लीकेशन का भी जो है उनके पास स्किल होना चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर दीज आउटकम्स, दीज लर्निंग आउटकम्स, वी नीड टू हैव सम क्रिएटिव अप्रोचेस इन आवर टीचिंग मेथड्स, राइट? And storytelling is a very important part, or like storytelling is a very useful tool in that context. Okay. Once upon a time in a land far, far away, teachers told tantalizing, creative stories that piqued the interest of the novice mind into applying and learning challenging concepts in various domains. ओके ये जो है रिलीजन की बातें हो सकती थी, ये जो है एथिक्स की बातें हो सकती थी, ये जो है वॉर साइंसेस से रिलेटेड बात हो सकती थी, है ना? ये जो है नॉर्मल फिलोसफी से रिलेटेड बातें हो सकती थी. जो भी डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड जो है ये कहानियां सुनाते थे गुरुजी. और these stories ignited a light that formed lasting memories so that they could be applied to solve everyday problems, ensure survival, and pass on this wisdom to other generations. ये मैं कहीं ऐसा नहीं कि मैं बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं. वैदिक लिटरेचर को आप ध्यान देके देखिए तो वैदिक नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड थ्रू जनरेशंस इन ओरल फॉर्म. Gurus or sages used to orally narrate this wisdom to their shishyas. Similarly, a folk literature की बात कर लीजिए. There are like so many folk narratives available around us which provide us some like interesting historical knowledge. Okay, which provide us some important cultural insights, right? Those of you who have ever gone to watch those folk performances, let's say Allahudal or Saldes or Lorik or anything, you will realize that these performances are a very powerful narrative tool that acquaint us with cultural knowledge, historical knowledge, so much of it, right? Similarly, I already gave you the example of Panchtantra. पंचतंत्र के बाद जो है वो नारायण जी करके एक और लेखक हुए, उन्होंने हितोपदेशा लिखी, राइट? तो ये सभी टेक्स्ट जो है वो इस बात का एग्जाम्पल है that since ancient time stories have been used as a pedagogical tool to transfer all the relevant knowledge to the students. एंड रिमेंबर लाइक स्टोरी जो है वो सिर्फ लिटरेरी नैरेटिव्स के फॉर्म में नहीं है, वो जो है काफी कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो सकते हैं. ओके, मैथ और साइंस में भी हम स्टोरी का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो है नैरेटिव्स जो है वो ह्यूमन या ह्यूमन लाइक इंटेंशंस में डील करते हैं, एक्शंस में डील करते हैं, और साथ ही साथ जो है उन कंसिक्वेंसेस को भी कैप्चर करते हैं जो कि उन एक्शंस की वजह से होते हैं. तो इस सब का असर क्या होता है कि बच्चे या फिर जो लर्नर जो है वो तो बेसिकली एक नैरेटिव को फॉलो कर रहा है, लेकिन नैरेटिव को फॉलो करने के प्रोसेस में जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी, काफी जो है चैलेंजिंग आइडियाज को भी जो है वो एक कंक्रीट फॉर्म में गैदर कर पा रहा है, समझ पा रहा है, राइट? और साथ ही साथ जो है अनलाइक नॉर्मल लेसंस दैट यू ऑफर इन योर क्लासेस, अब जाते हैं फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, अनलाइक दोज स्टोरीज का फायदा क्या है कि बच्चे जब कहानी को सुन रहे हैं एक ही साथ जो है
कैरेक्टर्स के साथ उनके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, वो सोच भी रहे हैं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर फलाना राजा जो है या फलाना कैरेक्टर अगर तीर चला रहा था तो तीर उसने ऐसे उठाया होगा, ऐसे खींचा होगा, ये सारी चीजें वो जो है विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो एक साथ मान लीजिए कि डिफरेंट लेवल्स पर आपके बच्चे का जो है दिमाग जो है वो एक्टिव है, आपका बच्चा जो है वो मल्टीपल लेयर्स में जो है सीख रहा है ऑलरेडी। तो इस तरीके से स्टोरी टेलिंग जो है वो रेलिवेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बच्चों का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है, इट इज रेलिवेंट नॉट जस्ट बिकॉज इट इज अ वेरी यूजफुल टूल ऑफ पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू योर learners. It is also important because it engages various cognitive, you can say, tools available with you simultaneously. Okay, आपके थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपके इमेजिनेशन, सबको ये साइमल्टेनियसली एक्टिवेट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी पावरफुल pedagogical tool. Now let's talk about what is the purpose of stories, right? I mean, why do we tell these stories? तो well, पहला बात तो ये है कि बेसिक अगर हम बात करें, that stories make the subject accessible to students. Okay? साथ ही साथ जो है जो नोविसेस हैं, जो नए नए जो इस फील्ड में आए हैं पढ़ाई के लिए, उनका भी जो है ये अटेंशन अपनी तरफ खींचता है. They build a stronger schema and memory, making knowledge easier to recover. Okay, they assimilate new ideas and build a path to understanding, and they reduce resistance or anxiety to learning. Now let me elaborate upon these points one by one. Okay, now see, like when you are telling a story, first of all, like of course your story does not have to be any random story. Your story must be aligned with the learning objectives that you have defined for your class. Learning objective, if you remember when we had that session on essential components of lesson planning, वहां पर हमने बात किया था ना कि लेसन प्लान करते वक्त हमें जो है लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पहले ही जो है डिफाइन करना पड़ता है. तो वेल इट्स लाइक दैट. तो पहले जो लर्निंग आउटकम हमारा है, जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम हमारा है, उसके हिसाब से ही हम स्टोरीज को चुनते हैं. तो स्टोरीज क्या करती हैं, तो वो जो है उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाती है. For example, let's say that we are trying to explain the concept of mutual survival of like people living in a society who are whose interests are linked with each other. तो एक तो तरीका ये है कि हम जो है इस पर लंबा चौड़ा जो है प्रवचन दे देंगे, right? It can be a huge sermonizing kind of thing. There is an easier way to doing that. Like there is a story in Sanskrit we had read when we were kids, Bharund Pakshi Katha. So इसमें basically जो है it's about a bird that had two heads, and one evening they are walking on the beach, and then one head notices a fruit which looks very amazing and everything. It is amrit, but it's very tasty. So that head, like sees that fruit and it starts eating it. The other head, which is attached to the same body, also wants to taste that fruit. But the first head that found the fruit, tells him, why do you need to eat this fruit? I am already eating it, and both of us have the same stomach, so it's going to the same place. So, well, let me have it. Now, the second head doesn't say anything further, but then it's really pissed. Okay, it wants to take revenge from the first head, and that is what it exactly does. After a few days, they are again walking on the beach, and then they come across, a fruit that looks, very dangerous from the very outset. It's a poison fruit. And the second head that finds it wants to eat it. The first head tries to stop him. Don't eat this fruit. Don't eat this, please. Okay, it will kill us. But the second head says, why would you care? You found the Amrit Phal, you ate it. Now I have got this wish phal. I am going to eat it. It's my choice. And then it starts eating that fruit. Now, the moment the fruit, enters his body, well, it's all done. They die. But when they die, both the heads are dead, right? It's not just that, the head that ate that fruit is dead. Both the heads are dead because the body is dead, right? So that way, by sharing the story of Bharund Pakshi, we can teach our students complex thoughts of, interdependence of different communities within a social setup, right? Something which can be a key lesson in our civics. Similarly, like when you are teaching, let's say when you are going to start a science topic, it is very
like it is very common that students who don't have good science background, they might not be very interested in whatever you are teaching. Okay, you start teaching about, let's say, like metal and non-metal and everything, and well, you will find that some students in the class, they are like, they are pretending to listen to you, or they are like already scribbling something in their notebook, or they're talking to some other students. Reason is that they don't have like sufficient prior knowledge of those scientific concepts, so they cannot like quickly relate to that topic. That is where the story comes to your rescue. You can start with a story. Let's say that like how there was a war between these two countries, and then this country had advantage because they had discovered uses of metal. And with, I mean, since these metals could be given any shape, so they created very different types of weapons using those metals, and that ensured their victory in the battle. Of course, you can make this story a bit longer, more interesting, but point is that even those students who are not interested in the theory of metal and non-metal, what the properties they have, what physical properties they have, right? Even those students will get interested to that story, and once they get interested in that story, you have got their attention. Now you can pass on the knowledge of physics to them. Okay, and there is one more thing, that stories are way easier to remember than normal scientific theories. I can just give you a simple example of history. For example, I mean, if someone asks, like who were the key members in Akbar's court, students could remember very few names, but one name people will never forget. You know that name? Birbal, right? Whenever someone takes, whenever someone mentions Akbar, Birbal always comes along. Why? Because Birbal has been part of countless stories, right? So stories always build stronger schema and memory. That way it becomes easier to remember it, right? For example, I just shared that Bharund Pakshi Katha with you guys. I read that story when I was in grade 6 or 7. Sanskrit, we had that chapter, right? So it has been a long time since, but I still remember that story because that is the beauty of stories. Okay, they build stronger schema and memory, so it becomes easier to recover that knowledge. And remember, like, since stories are supposed to be fun, since stories are supposed to be interesting, that's why like students offer least amount of resistance when you are using storytelling as a pedagogical practice. ओके जब आप बच्चों को जो है कहानी सुनाकर जब पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है वो सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो सबसे कम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे क्लास में. द रीजन इज बिकॉज एवरीवन लव्स स्टोरीज. Okay, as long as it's well narrated and well presented. Now let us talk about the purposes of story. तो जैसे कि accessibility का point हमने already discuss कर लिया है, right? कि स्टोरी जो है वो क्या कर सकती है, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स को जो है ऐसे प्रेजेंट कर देंगी कि वो लोगों को समझने में जो है आसान हो जाएगा, है ना. स्टोरीज जो है वो बेसिकली आपको साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस के कह सकते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस से फेमिलियर करवा सकते हैं. टीचर्स जो होते हैं वो इसलिए जब जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, है ना, तो अक्सर क्या होता है कि वो जब कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं तो बड़ा जो है हाई फाई वर्ड सब यूज करने लगते हैं वो. Okay, basically experts in a particular field are very likely to use technical jargons in those stories. For example, मैं अगर पढ़ाने जाऊंगा, so let's say like if I am teaching political science, I can just talk about there was the hegemony of upper class, or the upper class hegemony ensured that people did not question anything, right? अब प्रॉब्लम क्या है कि हेजिमनी होता क्या है, स्टूडेंट्स डोंट नो दैट, राइट. इसी तरह से जो है तो यही एक प्रॉब्लम आती है. तो इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चे जो यंग लर्नर्स हैं who are not familiar with that kind of knowledge, who are not familiar with those type of terms, right, they can get intimidated. वो बेचारे डर जाएंगे, अरे बाप रे क्या हो रहा है. That is what happens. They will lose interest in the topic. They will not learn anything. Your learning outcome, your intended learning outcome, it won't be achieved. But if you use storytelling in its place, storytelling basically breaks down that concept. Okay, that's the language related communication barrier. Stories remove that, because stories do a very simple thing.
Stories take certain characters, they take certain action, and they take, like build up a narrative which presents a particular idea in a simple form, right? तो इस तरीके से जो है क्या हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो गया बच्चे का, और उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा। अटेंशन नोविस का माइंड का क्या हो गया कि अब जब आप एक स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं तो बच्चों का ध्यान आपके ऊपर चला जाता है, बच्चे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है अट्रैक्टेड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्गर स्कीमा एंड मेमोरी, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट्स लाइक सिग्निफिकेंस, राइट? कि जो स्टोरीज के थ्रू जो नॉलेज आप गेन करते हैं उस नॉलेज को रिकलेक्ट करना जो होता है वो काफी आसान हो जाता है ना? इसके अलावा जो है असिमिलेटिंग न्यू आइडियाज एंड बिल्ड ए पाथ टू अंडरस्टैंडिंग। देखिए बेसिकली स्टोरीज जो है वो बेसिकली क्या करता है, तो बच्चों को जो है कॉम्प्लेक्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का जो है पहला एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। ओके, like there is a scientist named something Green. Okay, I still remember, like I had read a book that was called Big Bang, and it was written by an author named Simon Singh. Now that book actually dealt with very complex concepts of, Einsteinian physics. Okay, and remember, like I have no science background, right? Still, when I read that book by Simon Singh, I found it, I mean, he had narrated it, as a sequence of stories, actually, like everything was narrated more like a story. And as a result, even those complex ideas of Einsteinian physics, and then how, like the observations through Hubble telescope proved Einstein's theory to a great extent. तो ये सारी चीजें जो है मुझे समझ में आ रही थी, थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन वो आ रही थी। And it, like ignited a deeper interest in science. And I started, like watching more YouTube videos based on, like Royal Science Society lectures based on scientific topic, right? तो beginning कहाँ से हुई? लेकिन stories से। वही स्टोरी जिन्होंने की उन एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जो है स्टोरी के फॉर्म में, नैरेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट किया, और जिसकी वजह से जो है एक फाउंडेशन मुझे मिल गया ऑन विच, like I can develop further, right? तो इस तरीके से जो है स्टोरी टेलिंग is very important. It serves your teaching goals. Now let's move to the next question. When to use storytelling, right? अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा लेसन प्लान जो है वो सिर्फ स्टोरी पे ही रहेगा, राइट? स्टोरी टेलिंग कैन बी यूज्ड एज अ टूल विद इन योर ओवरऑल, यू कैन से, लार्जर इकोलॉजी ऑफ लर्निंग ट्रेजेक्टरी। ओके, पूरा जो आपका पढ़ाने का, बच्चों को सिखाने का जो ओवरऑल आपका फ्रेमवर्क है, इसमें स्टोरी टेलिंग कैन बी वन मेथड। ओके, it can, like basically you can say add some variety to your students learning experience, right? Chalk and talk approach, we can say. तो ये स्टोरी जो है वो सीक्वेंस के बिगनिंग में हो सकता है, तो लेसन प्लान के बिगनिंग में ही हम जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डे हिटलर died, or today I'm going to tell you about how Hitler died. And then we will start with the story of Hitler, right? Yeah, it can be used in the middle. Let's say that we have, like I mean, we have outlined the learning outcomes for that particular lesson. We have told the students that, okay, we are going to cover this, and this thing. And then let's say that we are going to introduce a new concept. Let's say in maths we are talking about factor or something else. यहाँ पर भी हम स्टोरी को जो है एम्बेड कर सकते हैं, स्टोरी को यहाँ पर भी जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं, और उससे क्या हो जाएगा अब? वेल डेफिनेटली लाइक बच्चे जो होंगे उनके लिए जो है उस कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शन को समझना आसान हो जाएगा। या फिर जो है हम स्टोरी टेलिंग का यूज जो है एंड में भी कर सकते हैं लेसन के, टू समराइज द इंफॉर्मेशन। अब जब हम स्टोरी टेलिंग का यूज करेंगे, या स्टोरी टेलिंग का यूज हम कब करेंगे, इसके लिए हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि स्टोरी को कब इंक्लूड किया जाए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दैट यू आर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर साइंस टॉपिक एंड यू नोटिस दैट स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट यू। Now, normally when we see, like students looking in our direction, we have the satisfaction of knowing that yes, students understand everything, right? हमें ये satisfaction होता है
कि बच्चा जो है सब कुछ समझ रहा है, बच्चा मैं जो है बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, बच्चा मेरी बातों को जो है एकदम से समझ रहा है, गट गट पी रहा है मेरे नॉलेज को, है ना। बट यू हैव टू नोटिस देयर आईज. Is their expression changing with whatever you are saying, or the expression remains the same, constant? If it's that constantly the same expression, it means the students are looking at you with a glassy, tired eyes, right? And it means that students are not really following whatever you are teaching, or students are losing interest in whatever you are teaching, but still they are looking at you to give you the impression that yes sir, we are present in the class. रियलिटी क्या है कि बच्चे आपके क्लास में प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली वो प्रेजेंट है बट मेंटली वो कहीं और जा चुके हैं, बिकॉज वट एवर वी आर टीचिंग देम दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली. तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बच्चे हमारे जो एकदम लॉस्ट हो गए हैं, एकदम चेहरे का एक्सप्रेशन सब गायब हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? यस, वी कैन इंट्रोड्यूस अ स्टोरी, राइट. कभी अगर हम ये देखते हैं कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्विजेज और एग्जाम प्रॉपरली, तो मतलब क्या हो गया? दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक प्रॉपरली. सो इन दैट केस what tool do we resort to? We resort to storytelling, right? तो इस तरीके से जो है दो की सिनेरियोज हो गए. एक तो तब हो गया जब बच्चे का ध्यान जो है वो आपके लेसन पर नहीं टिक पा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वी विल यूज, what will we use? We will use storytelling as a pedagogical tool. We will include storytelling within our lesson plan. But if in case, but another scenario can be where you have taught everything, maybe students were paying attention or maybe they were not paying attention, but the exact you can say outcome is that students have not understood the topic. And how do you know that? Well, you have conducted, formative assessment, you have given them quizzes, or you have conducted some, lesson and exam, and you have realized that students are not understanding it properly. Okay, तो इन सब सिनेरियोज में हम क्या कर सकते हैं? हम स्टोरी टेलिंग के मेथड को यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सब देखा है? पहला तो हमने देखा है कि हमें क्यों स्टोरीज यूज करनी चाहिए, राइट? और वहां पर हमने क्या देखा कि हमारा फाइंडिंग ये है दैट स्टोरीज बेसिकली हेल्प अस प्रेजेंट complex abstract ideas in concrete material form that is easily comprehensible for the students. साथ साथ हमने ये भी देखा है that stories actually allow us to grab attention of the students, keep them focused on whatever we are teaching, and that way ensure maximum learning outcome from our teaching, right? Besides that, we also analyzed the situations where we can use the stories, and then we saw that stories can be placed either in the beginning, middle, or end of a lesson, and we have to use stories, or we can include we should think of including stories in our whole pedagogical practice when we realize that our students are losing interest in the overall learning teaching learning process, or when we observe that our students are not able to comprehend a particular topic, maybe the topic is too complex or too complicated for them. So in such cases, use of like storytelling can come quite handy. It can help you to teach them explain that concept much easier. Now we are going to talk about the types of stories that we can use while teaching a class. Okay, किस तरह की स्टोरीज को जो है हम अपने लेसन प्लान का हिस्सा बना सकते हैं. तो पहला तो हमारा हो गया केस स्टडीज. These case studies can be like historical case studies or like real life cases, okay, person anecdotes. तो केस स्टडीज जो है ये भी एक टीचिंग टूल हो सकता है जो कि रियल सिचुएशन में किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है. ओके, केस स्टडीज को अगर हम एक टीचिंग स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है एक पर्टिकुलर नॉलेज या स्किल को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रख के उसका मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करता है. ओके, इस केस को जो है हम स्टैटिस्टिक्स में भी यूज कर सकते हैं. इस केस स्टडी को जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी को समझने में भी जो है यूज
कर सकते हैं. For example, I will just tell you a situation. Like there was a person who had, an iron rod passing through his head. Now, interestingly, that person was, that person had the ability to read, but he had lost. I mean, he was unable to speak certain types of words. अब इस केस में क्या होता है कि through by of course I don't remember that story in much detail, but when you are teaching in class or when you are using your cases, we need to have proper detail. My bad that I don't have the entire story with me. So anyways, like ये जो story है, it can be very useful in showing the students how different parts of our brain controls different aspects of our actions or our behavior or our personality. Like there was another case of brain injury where the person could not feel any pain altogether, right? And it means, it basically meant that, there is a particular part of our brain that controls our, experience of pain, right? Another thing that we can use, and it is very widely used, it has been very widely used, is the form of fable and parables. Now, what are fables? Fables are succinct fictional stories that feature, animals, inanimate objects, non-humans, and others that are anthropomorphized and that demonstrate some kind of lesson. ओके फेबल्स जो है बहुत ही छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिनमें कि आपको एनिमल्स मिलेंगे, निर्जीव चीजें भी मिल सकती हैं, पेड़ पत्थर भी इसमें बात कर सकता है, जो नॉन ह्यूमंस हैं लाइक हिरन, टाइगर, लायन, ये सब भी इंसानों की तरह बात करते हैं क्योंकि इन सभी को एंथ्रोपोमोर्फाइज कर दिया गया है, इनको जो है ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है. एंथ्रो रिलेट्स टू लाइक ह्यूमंस, तो एंथ्रोपोमोर्फाइज का मतलब हो गया किसी को ह्यूमन फॉर्म दे देना, राइट? तो फेबल्स वगैरह में क्या होता है कि एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन ह्यूमंस और बाकी चीजों को जो है ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, ह्यूमन फॉर्म देते हैं और उनके थ्रू जो है कोई एक कहानी जो है बहुत ही प्रिसाइज कहानी जो है वो हमें सुनाई जाती है जिसके थ्रू की कोई ना कोई एक मोरल लेसन मिलता है. Now, most of you may have used, I think, the story of the turtle and the hare, right? कछुआ खरगोश की कहानी तो आप में ज्यादातर लोगों ने यूज की होगी क्लास में, या फिर कई लोगों ने जो है वो भेड़े और भेड़िया की जो कहानी है खैर हरिशंकर परसाई की, वो भी यूज की होगी. दैट्स आल्सो अ टाइप ऑफ फेबल. ऑफ कोर्स इट्स सैटिरिकल टू अमेजिंग एक्सटेंट, राइट? तो इस तरह से जो है फेबल्स जो होते हैं वो भी एक स्टोरी है, उसका यूज करके हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. बच्चों के लिए हम उसको जो है इजीली मेमोरेबल बना सकते हैं. अनदर थिंग इज पैराबल्स. पैराबल्स भी जो है ये भी फिक्शनल स्टोरीज हैं जिनमें कि एक्सक्लूसिवली ह्यूमंस होते हैं और ये भी एक टाइप का जो है लेसन जो है वो सर्व करता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दैट you are planning to share a lesson on what you call it, not thinking too far ahead, staying in the moment. So let's say we are talking about significance of that thing, right? तो अगर हम इस तरह का कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि हमें इस कॉन्सेप्ट को, इस लर्निंग आउटकम को भी अचीव करवाना है, इस चीज के बारे में बच्चों को जो है सोचने के लिए सक्षम बनाना है, तो like we can do a very simple thing. We can tell them the story of person who asked for like आम, राइट? वो जो है भिक्षाटन करता है, लोगों से जो है आम जो है वो कलेक्ट करता है, ALM वाला आम, नॉट आम और आम खाने वाला. ही कलेक्ट्स आम एंड नाउ like every day he has some spare grain. तो वो क्या करता है, तो वो जो है उसको जो है धोती में बांध के और अपने खोपड़ी के ऊपर जो है डंडे में बांध के लटका देता है. Okay, now gradually he has got a sack, almost a sack full of extra grain with him, and one afternoon he is sleeping under that sack and he keeps it right over his head so that no one steals it. So he's sleeping under the sack and then he starts imagining that there will be a famine. During that famine I will sell this grain for really high price. Then with that money I will buy a cow. After that cow will give birth to calf. I will have another cow, then more cows. I will sell the milk. I will have more money. I will start lending money to people. I will be rich. I will get married. Of course, like I will have a child. That child will, like come outside to disturb me when I'm dealing with my clients, right? My debtors.
Okay, so I will get angry. I will go inside and I will kick my wife, asking her to mind her son. And सोचते सोचते बेचारे ने लात चला दिया. And then he hit basically that sack of grain that was hanging over his head, and everything came down. Okay, all that, like flour and everything was spread on the floor now. It was mixed with dirt and everything, and it had become completely useless. बेचारा जो है वो आसमान से कहाँ गिरा, जमीन पर गिरा. Now, when you are telling this story in a lively manner in your class, basically you are able to explain the, idea of staying in the present, being mindful of the situation, right? But you don't have to make it any complex, abstract argument. You present it interestingly in the form of a story that is both funny and instructive, right? So that way we can use fables or parables as a part of our lesson plan. We can also use historical narratives to spark interest in the technical knowledge. So for example, well, let's say like when you're talking about the concept of, like nuclear fission, which may be a topic in class 9 or 10 physics or chemistry, I'm not sure. Anyways, the 9th 10th में जब आप बच्चों को nuclear fission का concept समझा रहे हैं, तो we can talk about, the story of Project Manhattan, right? How, like some how, like some scientists got Einstein worried that Germany might be working on, like developing nuclear bomb and everything. And then like he requested President Roosevelt, I think, to develop, work on, start this project. And that is how the Project Manhattan began. And finally, they created and built the atom bomb, which was eventually tested on Hiroshima and Nagasaki, and the great, like human tragedy it caused. राइट. तो इस तरीके से जो है ये हिस्टोरिकल नैरेटिव है, लेकिन ये हिस्टोरिकल नैरेटिव जो है बच्चों को ग्रेजुअली किस पॉइंट पर ला रहा है? द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दोज एटॉमिक बॉम्ब्स. एंड व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दोज एटॉमिक बॉम्ब्स? दिस वाज द टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर फिजन. एंड व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर फिजन? तो वेल, न्यूट्रिनो जो होता है उसका स्लो मूविंग न्यूट्रिनो का बॉम्बार्डमेंट होता है, ये ऐसे टूटता है, ये फूटता है, वगैरह वगैरह, राइट. यही चीज था, यही टोटल जो है कॉन्सेप्ट होता है. तो इससे क्या होता है? दैट स्टूडेंट्स गेट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ऑल्दो यू स्टार्टेड टेलिंग देम अ स्टोरी फ्रॉम हिस्ट्री, राइट. तो इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंट तरह की स्टोरीज को जो है यूज कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड सेक्शन ऑफ आवर टुडेज सेशन. तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि चलिए ठीक है, हम जो है स्टोरी क्यों यूज करेंगे लेसन प्लान में, ये हम समझ गए. कहां पर हम स्टोरी को यूज करेंगे, ये हम समझ गए. किस तरह की स्टोरीज हम यूज करेंगे, ये भी हम समझ गए. लेकिन अब अगला टॉपिक ये है कि हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्टोरी. बिकॉज यू सी लाइक a story is not as much about the content as it is about expression. प्लॉट में नहीं है जान, प्लॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नरेशन. तो इसलिए जो है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें जो है जो हमारा मेन लर्निंग आउटकम है उसको ध्यान में रख लेना है. उस लर्निंग आउटकम के हिसाब से हमें स्टोरी का स्क्रिप्ट जो है वो प्लान करना है. अगर मान लीजिए हम लोग जो है हिस्ट्री से मिलने वाले मोरल लेसन्स की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन की कहानी का जो होगा फोकस वो अलग हो जाएगा. और अगर हम न्यूक्लियर फिजन की बात करने वाले हैं तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनहट्टन का जो कॉन्सेप्ट फोकस हो जाएगा वो एक अलग डायरेक्शन में जाएगा. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम जो है स्क्रिप्ट प्लान करेंगे. कितनी देर का हमारा ये कितनी बड़ी स्टोरी होने वाली है, कौन हमारी इस स्टोरी का जो है ऑडियंस है, ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. हम किसी ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए जो है या स्टोरी के थ्रू जो है हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं जो कि बच्चों के लेवल से अभी भी ऊपर हो. या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग में भी हम जो है ऐसे लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं जो कि बच्चों के नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन लेवल के एबव हो. तो इसलिए जो है हमें स्टोरी का स्क्रिप्ट तैयार करते वक्त जो है एक्यूरेसी, लेंथ और ऑडियंस तीनों का ध्यान रखना चाहिए. साथ ही साथ जो है स्टोरी के कंटेंट को एनालाइज करना चाहिए और ये गोल सेट करना चाहिए कि अच्छा हाँ, मुझे ये चीज पढ़ाना है, इवेंचुअली मुझे जो है इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक से जोड़ना है. तो उस हिसाब से ही जो है मैं इस स्टोरी के स्क्रिप्ट को प्लान करूंगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट ओपन विद ए हुक. हुक का मतलब क्या होता है? तो स्टोरी को किसी ऐसे पॉइंट से शुरू करिए कि बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी कहानी की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो जाए, कहानी की तरफ उनका जो है झुकाव हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल, it was, or you can say that it was a really different night, or like Hitler had never imagined
he would die in such a way. So in such a way, कैसा वे, व्हाट वे? ओके बेटा, उसके लिए तुम्हें बाकी कहानी सुननी पड़ेगी और फिर हम शुरू करेंगे उन वर्ल्ड वॉर 2 के एंड की उन सारे सिचुएशंस के बारे में बात करते हुए, इसकी वजह से इवेंचुअली हिटलर को उस तरीके से मरना पड़ा। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल रिवील दैट हिटलर हैड कमिटेड सुसाइड मे बी, है ना। तो इस तरीके से जो है कहानी को एक हुक के साथ शुरू करना। यू माइट हैव सीन हाउ दे यूज दिस हुक इन न्यूज हेडलाइंस एंड एवरीथिंग, राइट। मैच खत्म होने के बाद शिखर धवन ने ये बोल दिया, दे डोंट टेल यू क्या बोल दिया, दे ऑलवेज राइट ये बोल दिया। इससे क्या होता है, यू क्लिक ऑन दैट लिंक, यू रीड रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड देन यू फाइंड आउट ओके शिखर धवन ने बोल दिया दैट बच्चों ने बढ़िया खेल खेला, है ना। तब आपको थोड़ा बहुत अफसोस भी होता है कि यार इतना पहाड़ खोद के जो है क्या निकला हमें। बट इन क्लासरूम सेटअप I know that your intention won't be like that, right? If you start with a hook, eventually you will deliver them a great lesson, that is for sure. But remember to use a hook in the very beginning of the story. Next thing is that story में जो हम characters use करते हैं, story को characters को हमें relatable, likeable बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टोरी में कैरेक्टर्स को लाइकेबल या रिलेटेबल नहीं बनाएंगे तो बच्चों का जो इमोशनल जुड़ाव होना है स्टोरी के साथ वो नहीं हो पाएगा। और जो हम लोगों ने सबसे शुरू में बात की थी ना, व्हाई स्टोरी टेलिंग एज अ पार्ट ऑफ पेडागोजी, तो उसमें से व्हाई वाले में जो इमोशनल लर्निंग वाला पार्ट है वो पार्ट मिसिंग हो जाएगा, तो कंप्लीट जो गोल है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो इसलिए जो है हमारे मेन कैरेक्टर्स जो है वो लाइकेबल और रिलेटेबल होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल लाइक इफ वी आर ए स्कूल इन रूरल पार्ट ऑफ बिहार, हमारे यहाँ के स्टोरी में जो है फ्लड कॉमन हो सकता है ना। एनिमल हस्बेंड्री का थीम जो है वो कॉमन हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि कोई जो है स्टीफन वाज ड्राइविंग विद हिज butler in a Mercedes S class or something, right? And then he came across Eiffel Tower. बच्चा कंफ्यूज ये आ जाएगा कि पहला बात ये क्या है, फिलिप फिलिप क्या नाम दे रहे हैं, मर्सिडीज एस क्लास क्या होता है हमारे यहाँ, है ना। तो गाँव घर में क्या है, ऑल्टो है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है ना। रिलेटेबल टाइटल होना चाहिए। बटलर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या है, चचा भैया मामा कोई न कोई एक पास साथ में रहेगा, बस इतना हम लोग जानते हैं। और ये एफिल टावर क्या होता है, हमारे यहाँ लोकल में दरभंगा में टावर है, लहरियासराय में टावर है, ये एफिल टावर क्या भला चीज है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हमें जो है स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को जो है लाइकेबल और रिलेटेबल दोनों बनाना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि हम उसको पसंद भी कर सकें और उसका डिटेल ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम रिलेट भी कर सकें। नेक्स्ट इज स्टार्ट विद द एंड एंड वर्क बैकवर्ड्स। स्टोरी के एंड में हम क्या करेंगे ये हमें पहले पता होना चाहिए, ताकि हमारा जो है ओवरऑल प्लॉट जो नैरेटिव जो होगा वो उस पॉइंट पर जाएगा। और फिर जो है फ्लैशबैक मेथड का यूज करिए, एंड बताइए, फ्लैशबैक मेथड का यूज करिए, पीछे जाइए, फिर बीच में आइए और फिर कंक्लूजन पर दोबारा आइए। और जब एंड पर आते हैं तो ऑलवेज हैव दैट aha moment, a surprise ending, some sort of revelation to end your story, because when you do that students have this a sense of gratification, wow मजा आ गया। और उसके बाद क्या होता है that whatever you are like further elaborating about that story, they are interested in it, they have got it right. So that is the way we can create an effective story. Now finally we are coming to the final segment of our today's session कि ठीक है चलिए हमने स्टोरी तो सुना दी बच्चों को, स्टोरी टेलिंग का यूज हमने अपने लेसन प्लान में किया। Now how effective was it? Because see, like whatever we are doing, whatever effort we are putting in any of task, eventually its success or failure will be measured in terms of the outcome, right? जो इसका आउटकम होता है उसी के हिसाब से जो है उसके फेलियर या सक्सेस को हम जो है मेजर कर सकते हैं, राइट। तो अब स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजिकल प्रैक्टिस, व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग इट्स इफेक्ट, what are the questions we need to ask, or what questions can we ask for this evaluation? Did the story achieve your instructional goal? जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया था, the learning objectives that you were expecting to fulfill through this story, were those learning objectives achieved? क्या बच्चों का ध्यान आपकी तरफ था? क्या बच्चों को कहानी पसंद आई? क्या स्टोरी का कॉन्सेप्ट उनको पूरा क्लियर था? क्या उन्हें स्टोरी का फैक्ट जो है वो रिकॉल कर सकते हैं?
कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया कि नहीं आया, क्या उस कॉन्सेप्ट को वो फर्दर जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने स्टोरी टेलिंग में फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया था और आपने जो है बच्चों को वो कहानी सुनाई थी ना, वो दो बिल्लियां आपस में, दो बिल्लियां थी, एक को रोटी मिली, दूसरी भी वहीं पर थी, दोनों झगड़ने लगे, झगड़ते झगड़ते दोनों जो है वो बंदर के पास पहुंचे और बंदर ने कहा लाओ मैं दोनों का बंटवारा कर देता हूं। और उसने फिर क्या किया, रोटी को दो टुकड़े में तोड़ के आधा इधर रखा और आधा इधर रखा, लेकिन उसने पूरी तरह से उसको आधा नहीं तोड़ा था, इसलिए रोटी का एक साइड जो है वो ज्यादा भारी हो गया और उसके बाद वो बैलेंस करने के चक्कर में बंदर ने क्या किया, पूरा रोटी जो है वो चट कर दिया। अब यही स्टोरी सुना के लेकिन हम बच्चों को ये बताएंगे कि अगर उस बंदर ने इस रोटी को बिल्कुल बीचों बीच काटा होता तो क्या दोनों साइड इक्वल होते, तो बच्चे क्या बोलेंगे, यस। So basically one will be one side will be one half and the other will be the other half. But you of course agree करेंगे because that is how it works. And that way you have taught them the concept of fraction. Now you can ask them to, like divide a biscuit into two halves, an apple into two halves or two parts, right? That way you can teach them you can see if they can apply the concept of fraction or not. राइट तो इस तरह से जो है इन सभी पैरामीटर्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू जो है हम इवेलुएट कर सकते हैं whether the storytelling, I mean like storytelling as part of our pedagogical, whether it has achieved its intended goal or not. और इसके लिए हम अलग अलग तरह के टूल्स यूज कर सकते हैं, हम जो है सर्वे कर सकते हैं, राइट, कुछ बच्चों से कुछ कुछ पूछ के या फिर जो है हम बच्चों से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करके जो है उनसे पता कर सकते हैं कि चलिए कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को कितना परसेंट समझ में आया। या फिर जो है हम एक बहुत ही छोटा सा जो है क्विज जो है कर सकते हैं, राइट, 1 मिनट का जो है उनसे एक राइटअप करवा के देख सकते हैं, या फिर जो है बच्चों को जो है एक थिंकिंग सेशन बच्चों को एलोकेट कर सकते हैं कि चलिए आप इस चीज के बारे में सोचिए, इसके बारे में बताइए। और इस तरीके से जो है हम अपने स्टोरी टेलिंग के इफेक्ट को जो है इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। So what did we learn in this session, in the later section of this thing? First of all, like किस तरीके से जो है किस तरीके की स्टोरीज हम लोग जो है अपने लेसन में यूज कर सकते हैं, where we saw that we can use like case studies or cases, personal anecdotes, fables, parables, historical narratives, right? We can use these different types of stories. Then we have just discussed like how to create an effective story, जहाँ पर हमने ये तो देखा ही है कि beginning, middle और end तो होना ही चाहिए, and the stories should begin with a hook that instantly grabs the attention of the students, it draws them towards you, right? इसके अलावा जो है हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह का कैरेक्टर उसमें हमको यूज करना है। The characters have to be likable and relatable. Likable मतलब कि वो बच्चों को पसंद भी आनी चाहिए, और relatable मतलब बच्चे जो है उससे जुड़ा हुआ भी महसूस करें। नैरेटिव टेक्निक क्या हम यूज कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल फ्लैशबैक इज सपोज्ड टू बी अ प्रेफर्ड मेथड, जहां पर कि आप जो है मोटा मोटी एंड पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर आप पीछे की तरफ आते हैं, फिर जो है आप मिडिल की तरफ मूव करते हैं, और फिर आप फाइनल जो है क्लाइमैक्स की तरफ मूव करके जो है एंड पर आते हैं, रिजोल्यूशन या कंक्लूजन पर आते हैं, है ना। फिर जो है स्टोरी के इफेक्ट के इवेल्युएशन जो है उसके साथ हम लोग जो है एंड करेंगे, जिसमें कि इवेल्युएशन किस टर्म में किया जाएगा कि बच्चे ने स्टोरी ने जो है बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि नहीं खींचा, बच्चों को कहानी जो है उसमें मजा आया कि नहीं आया, कहानी का की कॉन्सेप्ट उनको जो है क्लियर था कि नहीं था, क्या वो स्टोरीज के फैक्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रिमेंबर जब हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग के पर्पस के बारे में बात की थी, राइट, व्हाई स्टोरी टेलिंग, वहीं पर हमने देखा था दैट इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर स्कीमा and memory which makes it easier to recollect the facts later on, right? तो अगर मान लीजिए बच्चे जो है स्टोरी का फैक्ट अगर रिकॉल कर पा रहे हैं, means story telling has fulfilled its purpose. But if the students are unable to do that, it means somewhere our storytelling effort has failed in some ways, right? आगे जो है हम ये भी देखेंगे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। For like checking their understanding of concept, we can give them a quiz, we can give them like a brief paper to answer, or we can conduct a survey in the class, right? And then like we will also try to see whether they are able to apply those concepts or not. For them we can give them some like additional thinking and like speaking activity, right? तो इस सब तरीके से हम लोग जो है अपने स्टोरी टेलिंग के इफेक्ट को इवेल्युएट कर सकते हैं। Now we are like concluding our session here.
So we are going to have a complete overview of whatever we have covered in today's session. First of all, storytelling offers an easier and interesting way of explaining complex and abstract ideas to the students, right? Storytelling जो है वो कॉम्प्लेक्स और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उनको जो है आसान, कंक्रीट और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है बच्चों को समझाने का एक मौका है हमारे लिए। ये जो है लेसन की बिगिनिंग में यूज हो सकता है, मिडिल में यूज हो सकता है या फिर लेसन के एंड में यूज हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज अलाइंड विद द आइडेंटिफाइड लर्निंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन प्लान। स्टोरीज के फॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो दीज स्टोरीज कैन बी केस स्टडीज फ्रॉम हिस्ट्री और साइकोलॉजिकल domain or different domains of knowledge. This can be case study, fables, right? जो एनिमल्स वाली स्टोरीज होती हैं, पैराबल्स या फिर हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हो सकती हैं, ये है ना। ये जो स्टोरी टेलिंग का जब कभी भी हम लेसन प्लान में इंटीग्रेशन करते हैं, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड इट शुड बी अलाइंड विद द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स. And finally, whether we have succeeded in delivering our lesson through a story or not, for that we can have an assessment at the end. We can use quiz, survey, or some other method of formative assessment as well. So, well, that's it for today's session. Now, if you have any doubt or queries, you can just, share it in the chat, and I will be happy to answer your queries. Thank you. अरे छुट्टी हो तो देना, लाइन में आओ बेटा, खुला जी। I think we are already at the end of this session now. So thank you. You have been very patient listeners, and bye-bye. Thank you, sir. Thank you, everyone.